Our next session, titled Pakistani Cinema Strikes Back, is about to start. Our panelists are here. But before the session begins, I would request you to kindly switch off your mobile phones or put them on mute. We cannot start the session unless you get settled down, so please be seated. I do. The names of panelists are right there on the screen. Shahnaz Ramzi is going to moderate this session. She is a freelance journalist who has written on a variety of subjects, notably cuisine and cookery for various publications, both local and international. She has served as the Karachi correspondent for Dubai-based newspaper Emirates Today and has authored the best-selling book Footprints, published by Oxford University Press. Among our panelists, we have Nimra Butcher, Sania Saeed, Farjad Nabi, Hashim Raza, Nadeem Mandiawala, and Tipu Sharif. Ladies and gentlemen, we are very soon going to start our session. Kindly be seated. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for showing up in such great numbers to our session on Pakistani Cinema Strikes Back. The very fact that you all have come to this session in such great numbers, I think, speaks volumes for the fact that it really has struck back. Otherwise, who would have been interested in Pakistani cinema, right? For me, this session really holds a very personal, it's something that I've been really looking forward to do because I hail from a family of cinema owners. We used to have cinemas before my father-in-law, my husband, and because of the decline of the industry in 2004, we had to finally sell the last cinema, which was very heartbreaking to do, but at that time it was not a feasible proposition anymore. Now, to have, I think, over 105 screens in the country, and I believe that the number is going to be doubling by the end of this year. That's really a heartening proposition. And about a decade ago, we used to have, I think, about a couple of movies coming up from Pakistan. Now we've had 14 movies last year. I believe there'll be 40 movies by the end of this year. So things are looking good. We have a very, very august panel over here to discuss exactly how good things are and what the status is of Pakistani cinema right now. We are missing out on one, but I'll introduce our panelists to you. We have Farjad Nabi sitting right next to me, who's a successful director, producer. He also wears the hats of cinematographer and documentary maker. His most recent venture, which was Zindabad, was also selected to be sent to the Oscars, which I may add was the first selection in 50 years. Then, of course, everyone knows our veteran theatre and television actor, Sania Saeed. She has also made her debut on the silver screen with her performance as Begum Manto. Then we have Hashim Raza, who's the CEO of Cinepax Cinemas, which is the largest chain of cinemas, multiplexes in Pakistan. Tipu Sharif is on his way. I think he'll be here any minute. He told me that he was outside the gate. So he will be joining us shortly. And Tipu Sharif, aside from being a well-known television actor and singer, has also made his debut in a Pakistani movie, which he will be talking about. It's going to be released in the summer.
Then we have Nadeem Manviwala, who's Chief Executive Manviwala Entertainment. He is exhibitor, producer, distributor, and importer of films. Last but not least, we have Nimra Butcher, who's of course a theatre and television actor. She recently appeared in 2 Pakistani movies, Manto and Home Anjam. So we will begin with Nadeem. Nadeem, what, if you had to attribute the resurgence of Pakistani cinema to just one factor, what do you think that would be? Assalamu alaikum ji, thank you very much for calling me. I cannot attribute it to one factor, but I can to 2 factors. And both were the government policies which were changed in 2001 and in 2007. और ये वो 2 पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से यू सी द टर्न अराउंड, अदरवाइज देयर वुडंट हैव बीन ए टर्न अराउंड. और इन पॉलिसीज़ के पीछे कोई 20 साल की लड़ाई थी गवर्नमेंट के साथ. समझाना था उनको बताना था कि भाई ये 2 पॉलिसीज़ इतनी बड़ी डेटरेंट बन गई हैं जिनकी वजह से आपका सिनेमा कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे आ गया. और उसमें से एक आपकी 2001 के अंदर जो पॉलिसी चेंज हुई थी, विच वॉज अ वेरी वेरी हाई रेट ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूटी ऑन सिनेमास. नाउ एंटरटेनमेंट ड्यूटी इज़ अ प्रोविंशियल टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, but it remained, it started off in 70s from 100% and 150% and came down to 55 and 65, which still remain very high. 2001 में जब ये चेंज हुआ तो उसके बाद cinema became very feasible to build, but the real problem became that उस वक्त तक हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई. So we did not have anything to play, and that is where we started off again debating with the government कि unless and until popular demand cinema आप नहीं देंगे लोगों को, people are not going to come to the cinema. And good, bad, popular demand is the Indian movies. So automatically we kept on going कि जी regulated Indian movies को आने की किसी ना किसी तरह से इजाज़त दी जाए, which happened in 2007. And that, in my opinion, really changed the whole scenario, made a 180 degrees turn. And by 2007, we had completely finished our infrastructure of the industry. Now, when I say the infrastructure, it was not only the production infrastructure. We had finished the production infrastructure, the distribution infrastructure, and the exhibition infrastructure. And that is why you see a humongous gap between the old cinema and the new cinema. तो 2007 के बाद जब नया सिनेमा बनना शुरू हुआ, we never went through an evolution process जो every industry goes through in every country. And we stopped in 70s and we restarted in 2007. So there was a humongous gap in between. आज भी अगर आप देखने जाएं तो जितना नया सिनेमा बन रहा है और उसके बरक्स जो पुराना सिनेमा खड़ा हुआ है, विच इज़ नंबर्स में अब बहुत थोड़ा रह गया, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. एंड दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू गो फॉरवर्ड लाइक द अदर वन. Okay. I think these 2 policies created everything different for rebuilding of cinema. और जैसे जैसे आपका सिनेमा रीबिल्ड होने लगा, ऑटोमेटिकली वो कुछ सालों के अंदर उस हद तक पहुंच गया जहां कि अब आप फिल्में बना सकें, और अब फिल्में बनना शुरू हो गई. Okay. And somehow I had thought that you would say that it was allowing the Indian movies to be the first factor that really started helping build Pakistani cinema. No, it was, yes, it was one of the causes, but the real cause was the entertainment duty when government came down with the entertainment duty in 2001. क्योंकि जब तक आपको आगे बढ़ने की, देखें 30 साल में आप लोग, बहुत सारे लोग इधर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने 30 साल सिनेमा देखते रहे वो, बट सिनेमा नेवर चेंज्ड फॉर दोज 30 years. 60s, 70s, 80s, it didn't change. Why it didn't change? Because nobody could invest into the cinemas. आपके ऊपर जब इतना हाई रेट ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूटी होगा तो ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकेंगे.
So that was the real change which happened. अगर उस वक्त हमारे पास इंडस्ट्री होती तो वी वुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर इंडियन फिल्म, बट आप अपनी इंडस्ट्री का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर चुके थे उससे, एंड दैट इज़ वाई वी हैड टू आस्क फॉर इट. और इवन आपको मैं बड़ी सरप्राइजिंग बात अभी बताऊं कि इन 2000 लास्ट ईयर जब काफ़ी सारी मूवीज़ पाकिस्तानी बन के आई हैं, so exhibitors have started giving more preference to the Pakistani product rather than the Indian product. And that was amazing. That's really good. Great to hear. So my next question is to Hashim. Are Pakistani films really raking in the profits? Like last year, there were 14 films, but could they all be deemed as successful? So profitability is a very interesting concept. Just like in any other industry, where in Pakistan specifically, over the last 12 to 15 years, you have seen a lot of investors coming into Pakistan to invest in different industries. Movie making is one such industry where people get a deceptive impression when they look at the GBO number. GBO is defined by a gross box office. So when you see this news item on the front page of a newspaper saying that movie has done $5 million or $4 million or $3 million, that doesn't mean 100% of the proceeds are going to the filmmaker. So these days, to answer your question, look, from 2012 to 2015, Pakistani filmmaking industry has been growing geometrically. So 2012, you saw 2 movies come out. 14, you saw around 4 to 5 movies come out. 15, you saw around 15 movies come out. Out of those 15 movies, you saw Jawani Phir Nahi Aani. That has almost touched $4.5 million. $4.5 to $5 million. Probably they spent less than $1 million. But that doesn't mean that they have made all of those $5 million are going to the filmmaker. So now coming back to bullet point answer to your question, Shanaz, I would think more than 25% of the movies that were made in the year 2015 were profitable. Oh, brilliant. But I would think rather than investors looking into this proposition, I'm going to add to what Nadeem Bhai mentioned earlier on. We need passionate filmmakers to come back to this industry without thinking whether this movie is essentially going to be financially profitable or not, with a passion just to make quality cinema. This last year, I was just having this conversation with Nadeem Bhai. Movies like Manto, Shah, More, necessarily they were not profitable, but actually they added to your Pakistani cinema culture and heritage. They addressed some Pakistani issues which were very important to the cause. Entertainment will keep getting from Hollywood movies, from Indian movies, no matter from a whole bunch of other movie genres. But addressing the key issues is important. And I think it was very encouraging for our industry that right in the second year, you apparently made almost 20% of the movies which were not essentially commercially profitable. That's really great to hear. So you basically agree with Nadeem then that exhibitors are willing to show Pakistani movies more than even Indian movies, regardless of whether it's going to be commercially success or not? So, absolutely. I would agree to Nadeem Bhai, but having said that, I would, however, like to, one way or the other, be grateful to Indian cinema as well. Because wherever we are standing right now, after the introduction or reintroduction, if I would say, reintroduction of this Pakistani new cinema, I think one way or the other, the credit does go to Indian movies. Because we, as a culture, as a nation, are appreciative of Indian movies, Indian music, Indian songs. That's why you see Indian music everywhere in all the Pakistani weddings, the Pakistani mehndis. So we have been seeing a lot of incoming revenues coming out of Indian movies. But one thing is very encouraging here. You name any top-of-the-line Indian movie, whether it is Kick or Chennai Express or even PK, the movies that came out in the recent past,
when you compare those movies with the quality Pakistani movies, even in terms of gross box office, Pakistani movies have done significantly higher business as compared to Indian movies. So, for example, Bajrangi Bhaijaan and PK had done some business around $2.4 million. But when a good Pakistani film came out, like Jawani Phir Nayani, it did a business almost double the Indian movies. So having said that, again, two factors here. You as audience also encourage Pakistani movies all out. We as exhibitors, apart from our moral obligation and social obligation, there is no doubt about this, that we give a whole bunch of more shows to Pakistani movies, but commercially as well. It only makes sense for us to give more exposure to Pakistani movies as opposed to Indian ones. Okay, thank you. Farjad, with channels coming in a big way as either sponsors or producers of Pakistani films, when you do your budgeting, do you budget in the cost of the advertisements that are going to be shown on the channels, which are like phenomenal? That is the biggest cost a filmmaker has to face. Marketing and publicity right now should be at least 40% of a film's budget for it to make any dent. The films being produced by channels like ARY, there is actually no record on paper how much is being spent, but they already have that time which they use in advertising. When an outsider like us goes to these channels, they give us this lump sum amount on paper, and it goes by in a flash. Like Zinda Bhag's publicity, I'm not sure how many people saw it, but the publicity, it was a huge sum on paper that हम इतने के इश्तिहार चलाएंगे, इतना होगा. It just went out like that, nobody saw the advertisements. So it's a very lopsided market right now. एक तरफ channels जो films खुद produce कर रहे हैं वो लोग हैं, और एक तरफ independents हैं जो market से बाहर हैं, और वो dependent हैं इस वक्त channels के ऊपर. The power in the cinema market is very lopsided right now, and it's not in the favor of the independent filmmaker. Exactly, because the ones who are being supported by the channels, इतनी heavy advertising हो रही है that I think if they actually had to pay for that advertising, then you couldn't really classify those movies as great blockbusters and successes, right? Absolutely. Yeah. I believe filmmakers are the last to get any money out of making a film, and probably the smallest share also. I was just listening to Hashim saying that we must make films like Moore and Manto to add to the heritage of Pakistan. तो हेरिटेज में तो ऐड करते हुए ज़िंदगी बीत गई, अब हमने अपने बैंक अकाउंट में भी कुछ ऐड करना है, तो फिल्म मेकर तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं आज तक. It's very simple maths. From every 100 rupees you guys spend in cinemas, 50 to 60 rupees go to the cinema owner, cinema exhibitor, film exhibitor, and about, I think, 15% go to the distributor. In theory, 35% or 20% should come to the filmmaker, but it never does. वो रास्ते में इतनी deductions होती हैं. So I'm yet to find an independent filmmaker who has made anything in Pakistan. It's no fault of the market is so small. अभी हम शायद 80 screens पे खड़े हैं. जब जिंदा भाग आई थी 20 screens थी, अभी 80 screens हैं. 80 screens I think सिर्फ शायद अमृतसर के एक मोहल्ले में हो. The India is so huge. The market is so vastly different. That we can't hope to make any money for the next 5 years, I think. I'm talking about filmmakers. Okay. Sania, I wanted to ask you, with film stars, we've always associated them as being larger than life. We normally never see them other than in the big screens. People like Shan, people like Reema, they still have that aura about them because you don't see them at home in your bedroom the way you do all the TV stars. But now it's the television stars that are being fed as heroes and heroines for our Pakistani movies. Do you think we are losing out in any way in that sense? Not really. I think जो अभी तक सारी बात हुई है और जैसे नदीम साहब ने भी कहा, पूरी इंडस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ा और अभी उस प्रोसेस में है, अभी तो हुई भी नहीं है.
हम सब चाहे टेक्निकल साइड हो, चाहे राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, आपके पास पूल क्या है? सिर्फ टेलीविज़न ही तो है। और अब थिएटर के ट्रेंड एक्टर्स हैं जिनको आपने सिनेमा में देखा है, अप्रिशिएट भी किया है, उनको शायद आपने टेलीविज़न पे ना देखा हो, लेकिन बाकी तो जितने भी एक्टर्स हैं आप उनको जानते ही सिर्फ टेलीविज़न से हैं, और कोई और मीडियम भी नहीं था पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि जब रिवायतें टूटती हैं और नई रिवायतें बनती हैं तो फिर रिवायतें अपने अंदाज से भी बनती हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि फिल्म स्टार्स को लार्जर देन लाइफ ही होना चाहिए? ये तो कहानी पे डिपेंड करता है कि और वही स्टार कुछ दिन में लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि टेलीविज़न पे ये मुसीबत आ गई है कि अब जो छोटी स्क्रीन का एक्टर है, जिसे आपके बचपन के दोस्त जैसा होना चाहिए, द बॉय नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, योर खाला, योर पुप्पी, दैट इज़ व्हाट टेलीविज़न मेंट। बट अब वो टेलीविज़न पे ये लार्जर देन लाइफ पर्सोनास प्रैक्टिस कर रहा है और ऑफ स्क्रीन भी प्रैक्टिस कर रहा है और कर रही है। तो ये तो एक नई तरह का प्रॉब्लम टेलीविज़न के लिए खड़ा हो गया है सिनेमा के बनने से। लेकिन आई थिंक कि जब नई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि हम अपनी कहानियाँ सुनाएं। जो जितने नाम हाशिम ने अभी लिए, फरजाद की जो फिल्म है, जो कहानियाँ हैं, मंटो है, जिंदा भाग है, मोर है, जितनी भी फिल्में बनी हैं, ये हमारी अपनी कहानियाँ हैं। ये एक बहुत अहम बात है कि हम अपनी कहानियाँ सुनाएं, हम अपनी रिवायात ख़ुद बनाएं। इसमें वक्त लग सकता है, इसमें पैसे का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में या अपनी नौयत की फ़िल्में, अपने कल्चर की से मुताबिकत रखने वाली फ़िल्में हमेशा पागल लोगों ने बनाई हैं। आप इंडियन सिनेमा का आज जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, सब पागल लोग थे जिन्होंने वो सिनेमा, ये इंडस्ट्री बनाई है। मतलब गुरुदत्त जैसे स्क्रूलूस टाइप लोग थे। जितना बंगाली सिनेमा है, सब किसने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी? ये इन्होंने अपनी रिवायात ख़ुद डेवलप की हैं। हमें वो वक्त लेना चाहिए। हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने फिल्म मेकर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एग्जिबिटर को वो वक्त देना चाहिए जहां हम अपनी रिवायात ख़ुद बना सकें। अच्छी बात यह है कि ये सब इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये एक नई अच्छी रिवायत की शुरुआत है। तो स्टार्स इन देयर टाइम विल आल्सो बिकम लार्जर देन लाइफ। अभी अगर शायद कोई बहुत लार्जर देन लाइफ स्टार हो तो हम एसोसिएट ही ना करें। आपने जिन स्टार का नाम लिया, उन्होंने जो 2-3 फिल्में बनाई हैं, खुदा के लिए के अलावा नन वर सक्सेसफुल दैट वे। तो कभी कभी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो आपके दिल को लगते हों, जो लगता हो कि सच बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ठीक है। उनका परसोना का साइज़ जो है वो इतना शायद मैटर ना करता हो। सो आई थिंक इन टाइम आई थिंक एवरीथिंग will fall into place. Okay, so do you think that we are ready more or less now for parallel cinema then? I don't know what parallel cinema means. Well, basically, आप as opposed to commercial cinema जिसपे आपके song and dance and सब चीज़ है, जैसे आपने अभी मंटो का जिक्र किया, या for instance Manto had song and dance. Yeah, it but started with the song and dance. Yeah, you won't call it as I think it's not an commercial item cinema. number. Yeah, exactly. But it was quite an item number, by the way. सानिया पैरेलल सिनेमा वो होता है जिसमें मुझे और आपको काम करेगा, उसके अलावा तो कोई नहीं। हाँ, ये एक, हाँ, आई थिंक वी आर रेडी। नहीं, और ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ऑडियंस है हमारी, वो हर तरह की कहानी, हर तरह का सिनेमा देखने के लिए तैयार है। मंटो चाहे कमर्शियली सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जिस तरह की ऑडियंस और जिस तरह का रिस्पांस मोर को मिला है, मंटो को मिला है, वो अनप्रेसिडेंटेड है ना। इसी बेसिस पे नहीं बनाते थे ना अच्छी कहानी कि ओ जी संजीदा सिनेमा कोई नहीं देखता, जो लोगों को नाच गाना देखना है, तो एंटरटेनमेंट को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया कि ये एंटरटेनमेंट है। अब ये जो हजरात हैं, शायद मैंने भी देखे
जवानी फिर नहीं आनी बड़ा मज़ा आया, इनको भी आया होगा, बट ये शायद मोर भी देखना चाहते हैं, बिल्कुल। जिंदाबाद भी देखना चाहते हैं, एंड व्हाई नॉट, बिल्कुल। तो इनके लिए भी तो सिनेमा बनेगा ना। सो आई थिंक हर तरह का सिनेमा बनना चाहिए और उसके लिए ऑडियंस तैयार है। सही है। In fact, I was going to come to that with Farjad, but first I'll speak to Nimra, and then we'll come back to हर किस्म की pictures. Ho Man Jahan, I believe, was the third top-grossing film after War and Jawani Phir Nahi Aani. It had none of the traditional masala in it. You didn't have your item number. It was a good family entertainment, no body humor and so on. So, what do you think was the reason for its success? I think definitely all the things that we've been talking about so far, जो नदीम साहब ने कहा, जो हाशिम साहब ने कहा, जो फरजाद ने, सानिया ने, कि एक तो ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रिलैक्स हुई हैं, सिनेमाज बने हैं ज़्यादा, लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिनेमा। अब आप जो भी फिल्म लगाएंगे वो आपने 10 साल पहले लगाई हो, 5 साल पहले लगाई हो, 2 साल पहले लगाई हो, उससे बेहतर वो फिल्म बिजनेस करेगी। हो मन जहाँ में एक चीज़ जो मुझे लगता है, एक और जो मुझे दिल से जो उसका सक्सेस लगता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सक्सेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट it's I think one of the first stories which is about us, हमारी अपनी कहानी, हमारी अपनी ज़बानी, हमारा अपना म्यूज़िक, हमारा अपना एक तरीका। अब जैसे आसिम रज़ा साहब के जो एड्स हैं वो हम सालों से देखते आए हैं, और उनके एड्स में कोई बात होती है, कुछ हमारे कल्चर के बारे में होता है, कुछ रिश्तों के बारे में होता है। सो आई थिंक इन दैट सेंस ही वाज an ideal person to make this sort of film, which is about family. It's about a culture which is not a dead culture. एक तो नॉस्टैल्जिया में हम लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं हमारे मुल्क में। हमें लगता है कि वो जो सिनेमा था ना, वो बस बहुत अच्छा था, अब बस उसकी तरह अगर हम हो जाएंगे तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज के ज़माने में तो आप अपने फ़ोन पे फिल्में बना रहे हैं, आप इंटरनेट पे फिल्में देख रहे हैं, आप छोटी स्क्रीनों पे फिल्में देख रहे हैं। सारी फिल्में बड़ी स्क्रीन्स पे नहीं देखी जा रही, लेकिन क्या वो फिल्में नहीं हैं? दे आर फिल्म्स बिकॉज दे आर स्टोरीज एंड दे आर टोल्ड एंड देयर इज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड एंड देयर इज़ अ थ्रिल एंड देयर इज़ एंटरटेनमेंट। सो आई थिंक हो मन जहाँ इन दैट सेंस इज़ सक्सेसफुल बिकॉज इट रियली फील्स लाइक अ पाकिस्तानी, लाइक हमारी फिल्म। मेरा तो यही ख्याल है। मेरे ख्याल में इंडिया से हमने बहुत सीखा है। ऑब्वियसली हम सब ऐसे टाइम पे ग्रो अप किए हैं जब हमने अपनी फिल्में नहीं देखी। आई थिंक मैंने बहुत कोई 80s में लास्ट ज़ेबा मोहम्मद अली की कोई फिल्म जाके सिनेमा में देखी होगी अपनी खाला अम्मी के साथ। उसके बाद सिनेमा ही जाना छोड़ दिया, तो सब कुछ VCR पे देखा, टीवी पे फिर ड्रामे देखे। तो ये जो हमारी जनरेशन है, ये सिनेमा बड़ी स्क्रीन को देखते हुए तो बड़ी भी नहीं हुई। तो जो हमने देखा और जो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी हमें हिम्मत चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए। 8 years ago जब मैं पाकिस्तान वापस आई थी कुछ अरसा बाहर रहने के बाद, उस वक्त मैं जिसको भी मिलती थी वो कहता था यार फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है। एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू सी कि वो सारे लोग आज या तो फिल्म बना चुके हैं या बना रहे हैं। इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। That is true. So just extending on that what Nimra just said, Farjad, एक ज़माने में जो पाकिस्तानी फिल्म्स का एक फॉर्मूला होता था कि इंटरवल से पहले लाइट रोमांटिक कॉमेडी टाइप चीज़ हो रही होती थी, रोमांस हो रहा है, एक पैरेलल कॉमेडी का ट्रैक चल रहा होता था, एंड देन इंटरवल के बाद खूब सारा मेलोड्रामा, रोना धोना और इवन ट्रेजेडी एंड ऑल, वो एक होता था फॉर्मूला, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 5-6 गाने होते थे और वो भी पता ही था कि भाई हर मूवी में इतने होने हैं। अब जो मूवीज़ आई हैं उसमें वी डोंट सीम टू बी फॉलोइंग एनी फॉर्मूला एज सच, दे ऑल वेरी वेरी डिफरेंट। So why do you think we are now just experimenting, or have we come up with a new formula now for Pakistani films? What exactly is happening? आई वुडंट से कि फार्मूला है इस वक्त। एक फार्मूला तो कट एंड पेस्ट की शक्ल में चल रहा है,
अनफॉर्चुनेटली जिन फिल्म मेकर्स के पास कहानियाँ हैं, सानिया और निम्रा दोनों कहानियों की बात कर रही थी, जिन फिल्म मेकर्स के पास कहानियाँ हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनके पास कहानियाँ नहीं हैं. सो पाकिस्तानी सिनेमा इसी I'm sorry. I think Shah should have gotten more money. He should have had more money. It was a fantastic film. It was a fantastic film. एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग टाइम है. हम लग रहा है कि लड़खड़ा रही है इंडस्ट्री या कुछ. हाशिम इस बात को बैक करेंगे कि इस वक्त इस तरह का टाइम है पाकिस्तानी सिनेमा में, स्पेशली फॉर यंग फिल्म मेकर्स हु माइट बी इन द ऑडियंस, कि आप कुछ भी बनाएं उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बड़ी स्क्रीन तक पहुंच जाए. ऐसा होता नहीं है. इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई एंड इट इज़ गारंटीड अ बिग स्क्रीन रिलीज़. पाकिस्तान में ऐसा है. सिनेपैक्स ने खुद, आपको याद होगा एक हॉरर फिल्म बनी थी स्याह, शायद 10 लाख रुपए में बनी थी, वो सिनेपैक्स ने रिलीज़ की. सर नाम ना बताएं. मैं तो बड़ा डरी थी उसको देखने के बाद, बहुत डर लगा. It was very good. I liked it a lot. Yeah. So just to No. I totally agree with you. This is very khushind, and that's why whenever I talk to film students, I always challenge them to make more and more movies. They don't have to be commercial. They don't have to be essentially doing all the check boxes, कि मसाला नंबर और वो सारी चीज़ें, but they will get access to the big screen. उसमें एक जस्ट टू रैप अप, मैंने अभी NCA की फिल्म ज्यूरी में था, मैं लाहौर में NCA के फाइनल ईयर की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की फिल्म्स बनाई बच्चों ने. उसमें एक स्टूडेंट था, उसके पास फ़ंड नहीं थे. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पास बहुत थोड़े फंड्स होते हैं, बट उसने अपनी फिल्म में एक आइटम नंबर डाला. अब जब फंड्स नहीं हैं और आप आइटम नंबर करना चाहें तो वो जिस क्वालिटी का टैलेंट और था, तो उससे ज़्यादा तो वो भालू को नचवा लेता तो ज़्यादा सेक्सी होता है. बट इट वॉज द एम्बिशन विच काउंट्स, आई थिंक. Say, Nadeem, with as many as 120 screens coming up by the end of the year, I believe, do you feel there's enough Pakistani product available to feed the cinemas? Or are we really way short of the mark? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि 120 स्क्रीन्स पुराने ज़माने में एक सिनेमा कहलाता था. मल्टीप्लेक्सेस के आने से एक सिनेमा के अंदर स्क्रीन्स आ गई हैं, सो वो मल्टीप्लाई करती हैं एक छत के नीचे. एंड दैट इज़ वाई दुनिया भर के अंदर जो हम व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेमा, we talk about sites and screens. So there are two figures now. One is how many sites do you have and how many screens do you have. So at this moment मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए इतना बता दूंगा कि in 2007 when we started, the first run movies were releasing in only 15 sites. And the market was not more than $300,000. So the entire market in Pakistan was just $300,000 with those 15 cinemas. That was all. And then when we started until today, we have grown up to nearly about 37, 38 sites, which is equivalent to about more than 70, 80 screens. I'm not barring those cinemas which exist but do not play the first run movies. क्योंकि फर्स्ट रन जब आप पिक्चर लगा रहे होते हैं तो उन सिनेमाज में लगा रहे होते हैं जो मोस्ट फीजिबल होते हैं आपके. सो एट दिस मोमेंट व्हाट वी हैव ग्रोन इज फ्रॉम 300,000 वी हैव कम अप टू $3.5 million. So that's a huge growth between 7-8 years. And if we keep on continuing, the day we cross $5 million for a very big picture, I think Pakistan is on the way for a big mark in the future. So automatically these screens are creating a huge contribution towards the development. The only thing in the infrastructure which is lacking and which is not yet achieved is studios. हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली है, फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, बट द फिल्म्स विच आर बीइंग मेड एट दिस मोमेंट आर विद ग्रेट डिफिकल्टी.
and there are some very passionate people who are making these films. 10-20% सोच के बनाता है कि ये वायबल होंगी, 80% अभी भी उस पैशन से बना रहा है, realizing कि ये पैसे नहीं आएंगे. So we need to create an environment, infrastructure, which in years to come will become beneficial for 80% to be viable rather than 20%. So automatically in screens का जो contribution है is going to be gigantic in the future. Okay. Nimra, what exactly do you look for in a script before you accept it? And the 2 movies you've done so far, have you found them challenging? Yes. फर्स्टली तो आपको एज एन एक्टर आप कहते हैं ये बड़ा है या छोटा है, हम कितने सीन में हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. आई थिंक दैट्स व्हाई इनिशियली व्हेन सरमद वाज मेकिंग मंटो, मैंने सोचा था ये मैंने नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए. इट वाज ओरिजिनली शॉट एज अ टीवी सीरियल, बट आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज रोल. जो एक औरत ओकेजनली कहीं कहीं से आ जाती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था. तो मैंने कहा था मैंने नहीं करना. तो अब जाहिर है जो आप होते हैं आपको उसी तरह का काम मिलता है, तो आई गेस दैट्स व्हाट ही थॉट कि मैं कुछ इस तरह का रोल कर लूँगी. तो आई थिंक I'm not really in that pool of stars or actors who sort of have like, you know, sort of huge roles kind of written for them or something. You know, looking for in a script. सानिया मुझे घूरियां मार रही है, ये हर वक्त मुझे पहले बता देती है कि ये तुमने कहना है, फिर मैं वो कहती नहीं हूँ, फिर ये नाराज हो जाती. There was no other choice for Hamzat, and Hamzat is Manto. How can anybody else do it? You had to do it. No, but really, I don't know. You know, it's really huge to be in any film. I think it's great in Pakistan जो भी बन रही है. तो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो उसमें आप जो भी कर लें, it's great. Yeah. So, Sania, there is something that actor has that makes them reach that level of becoming a super duper hit in a cinema. There are lots of very, very talented, good looking actors that I've seen in the past that started their career with television, went on to movies and never managed to make it big in movies, though they were super duper hits in television. What do you think is that one factor that really makes them reach that level? I don't think there's any one factor. हर एक्टर हर मीडियम के लिए नहीं बना होता. बहुत सारे थिएटर के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो नहीं अच्छे लगते स्क्रीन के ऊपर. कुछ लोग टेलीविज़न पे बहुत अच्छा करते हैं, फिल्म में नहीं उनका इम्पैक्ट होता. हर एक्टर की अपनी एक इंटेंसिटी और उसका अपना मीडियम होता है. बहुत रेयर एक्टर्स होते हैं जो सब मीडियम्स में उतने ही इक्वली अच्छे हों. तो आई थिंक एक्टर, लकी एक्टर्स वो होते हैं जिनको ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाए कि हमारा मीडियम कौन सा है. ज़्यादातर तो स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमें ब्रेक ही मिल जाए, चलो कहीं मिल जाए. तो यू नो लाइक all the big stars that you see today, Indian cinema की बात हो रही थी, even Hollywood for that matter, ये जितने बड़े बड़े stars हैं ये शुरू में कितनी बार reject हुए हैं. They were not even people like Amitabh Bachchan were rejects. They were fail कर दिया था उनको audition में कि इतना लंबा इंसान तो हीरो ही नहीं बन सकता. तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. ये ऑडियंस इतनी कोई खौफनाक चीज़ होती है ना, इनके दिल को लग जाए तो नवाजुद्दीन भी बहुत बड़ा स्टार है, ना लगे तो हसीन तरीन आदमी भी स्टार नहीं है. वो क्या नाम है उस बेचारे का, वो जो जैकी श्रॉफ का बेटा है, मतलब उससे ज़्यादा हसीन आदमी कौन आपको जो भी तो नहीं, मतलब I'm giving you an example. I'm saying good looks and all that. He has everything. He's a very good dancer. He's got a star father. He's got the looks. But
he's pika or whatever. I'm sorry if I know it's really cruel. I'm sorry, but I'm trying to give you an example कि या तो किसी के अंदर वो अपील है जो आपको इमोशनली मूव करवाती है, या उसके पास वो नहीं है, शक्ल सूरत हाइट रंगत कुछ ताल्लुक नहीं. I think personally. I welcome Tipu Sharif. He's coming straight from a shoot, which is why he was delayed. अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट. आज मैंने ज़िंदगी की एक बड़ी गलती कर दी कि मैं वर्क डे के बीच में एम ए जिना रोड ले ली मैंने. तो सिंधी मुस्लिम से मैं आ रहा था एंड माई टाइमिंग वॉज वेरी ऑफ, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी एंड आई होप द डिस्कशन हैज़ बीन फ्रूटफुल. मेरे जितने सीनियर्स और कोलीग्स यहाँ बैठे हैं हाईली रिस्पेक्टेबल लोग हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके थ्रू आपको फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला होगा. बिल्कुल. और अब हम आपसे सुनना चाह रहे हैं. आई बिलीव यू आर डूइंग अ फिल्म विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द समर. कुड यू टेल अस अ लिटिल अबाउट इट? मैम, आई वाज, एज सम ऑफ यू माइट नो, आई वाज अ पार्ट ऑफ मंटो एज वेल. एंड इस वक्त मेरी फिल्म आने वाली है सावन, विच शुड बी रिलीज्ड सम टाइम अराउंड ईद उल फितर दिस ईयर. इट्स अ मूवी ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग और उसमें एक हैंडीकैप्ड बच्चे की कहानी दिखाई है जिसे कुछ चाइल्ड ट्रैफिकर्स किडनैप करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से एस्केप करता है. इट्स अ पोलियो बेस्ड थीम, सो वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स मोर इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन्स नाउ. और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है. हमें अब हर वक्त, आई मीन ऑब्वियसली मुख्तलिफ जॉनर्स होते हैं. कॉमेडी होती है, थ्रिलर्स होती हैं, एक्शन मूवीज़ होती हैं एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं. तो दिस इज़ समथिंग that is going to be very different, just like Manto was, and I hope my role is appreciated. I'm playing an army major in it who ends up catching the don't tell us what you end up doing. But then what happens, ये अभी कुछ पता नहीं है कि पकड़ने के बाद क्या होगा. So इसलिए you're almost halfway there but not yet. चले. So how has the transition been, Tipu, for you from television to films? Ma'am, the transition is as yet incomplete. वो तो I guess वक्त के साथ साथ इंसान सीखता ही रहता है. But yes, I find films to be an easier medium of acting in than television. इसमें क्योंकि पहले से तैयार होके जाते हैं. टेलीविज़न पे ये होता है कि हमारे स्क्रिप्ट्स बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट होते हैं, बाज़ औक़ात उसी वक्त आप डायलॉग्स याद कर रहे होते हैं. एज आई एम श्योर सानिया आप एंड मैम निम्रा विल एग्री विद मी, बड़ा मुश्किल होता है. हमें बाज़ औक़ात 5 मिनट मिलते हैं 2.5 पेज याद करने को और उसके बाद उन्हें डिलीवर करना होता है. फिर हमें कवि साहब से कंपेयर किया जाता है और फिर फिरदौस जमाल साहब से कंपेयर किया जाता है. तो अब फिर आप वो भी तो देखिए ना कि याददाश्त कैसी है कि इतनी जल्दी इतना कुछ याद करके डिलीवर करना. फिल्म्स में आप प्रिपेयर करके जाते हैं कैरेक्टर. यू हैव टाइम टू गेट रेडी. आपका कैरेक्टर आपको पहले से पता होता है, स्क्रिप्ट आपको याद होता है, बड़ा रिलैक्स तरीके से काम हो रहा होता है. देयर इज़ रूम फॉर एवरीथिंग. कोई फियास्को हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए तो वो भी डील कर दिया जाता है. तो इसलिए इट्स मच मोर रिलैक्स्ड. आई फाइंड दैट टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग. जी, okay, thank you. Thank you, ma'am. I think before we open the floor to questions, I'll ask one last question, and this is going to be to Farjad. I know that producers have financial problems. They're trying to finance the movies, so then they start looking for people to sponsor certain their movie in some way. Product placement हो जाती है. हमने तो पूरे एक आइटम नंबर भी देख लिया है प्रोडक्ट प्लेसमेंट के ऊपर. यू नो 2 राइट. वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन? आई मीन ठीक है, एक सटल किस्म का प्रोडक्ट प्लेसमेंट हॉलीवुड मूवीज़ में भी होता है, लेकिन हम तो कुछ ज़्यादा ही ब्लेटेंट करने लग गए हैं ना लास्ट मूवीज़ जो हमने देखी हैं. डजंट इट सॉर्ट ऑफ रियली Yeah, it's again it's a crisis of imagination on part of the sponsors, and also अभी mature नहीं हुआ. I mean in India and Hollywood, while you're writing the script, उसी में product placement शुरू हो जाती है. यहाँ जब फिल्म बन जाती है, कहते हैं जी एक गाना डाल दें, उसमें ये प्रोडक्ट आप दिखा दीजिए. सो इट्स द मार्केट इज़ मच्योरिंग. ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा. इसमें ऑडियंसिस की तरफ से भी आवाज़ उठे तो बेहतर है कि भाई ये क्या आप दिखा रहे हैं हमें, हम इश्तिहारों से भाग कर आए हैं सिनेमा में, इधर भी आप इश्तिहार दिखा रहे हैं हमें. सो आई थिंक सम टाइम
it will take some time. अभी बहुत ज़्यादा power है sponsors के पास. There's too much power with the sponsors and not a lot with the. फिर खैर जिंदा भाग तो it was too early in its day. We didn't have any sponsor for that. But now when you start thinking about a film, you automatically start thinking कि इसमें क्या होगा. अभी मुझे कोई कह रहा था कि कोई शान मसाला किसी तरह से सीन में डाल दें. तो बड़ी आसानी से डाल देंगे. हमारी हीरोइन तो किचन में ही होती है. हाँ, अगर एक्शन थ्रिलर हो तो उसमें शान मसाला कैसे आए, सोचने वाली बात है. हाशिम, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके बाद? एक्शन सीक्वेंस में वो मुट्ठी में शान मसाला पकड़ के विलेन की आंख में फेंक सकता है. लाल मिर्च है ना? To add to Farjad, look, this happens everywhere. I think Farjad opened the floor by saying that they do not budget for the marketing expenses. So sponsors do help there in Hollywood, in Bollywood, everywhere. लेकिन फ़र्क शायद ये है कि भाई स्पेक्टर जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी, उसमें ऑस्टन मार्टिन दिखाई है और एक उसका फीचर दिखाया है, बट nobody was able to say कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं. ओमेगा दिखाई है, बहुत बड़ी घड़ी हर जगह लगी हुई है. एवरीबडी न्यू कि ओमेगा इज़ पेइंग फॉर इट, बट नोबडी न्यू कि ये मार्केटिंग हो रही है. पाकिस्तान में जब दिखाएंगे तो अंगूठी की जगह भी कॉर्नेटो कौन खिलाएंगे. सो एवरीबडी वुड नो कि यार ये तो कोक इज़ राइट ऑन योर फेस. सो आई थिंक वी नीड टू गेट देयर फ्रॉम अ फिल्म मेकर परस्पेक्टिव as well as from the sponsor's perspective as well, कि स्पॉन्सर को भी ये बोलना चाहिए कि हाँ यार मुझे इस तरह ना दिखाओ, इज्जत से दिखाओ. हम इतनी डेस्परेट प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं कि हम अपनी हीरोइन को लहंगा भी उसी रंग का पहना देते हैं जो उनके पैकेट का रंग होता है. सो यू नो, तो हम तो बहुत ही इस वक्त डेस्परेट हैं कि कहीं हमारा सामान रख दो बस. चलें, I think I'll thank you all and we'll open the floor to questions. I can already see some hands up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ खालिद हाशमानी. इत्तेफाक की बात है कि मैं तकरीबन 10-15 साल से टीवी मीडिया से अटैच्ड हूँ. बहुत सी चीज़ें जो आपसे मतलब मैं सुन रहा हूँ नदीम आदमी वाला साहब से, और बजट्स नहीं आ रहे हैं, फिल्में लॉस में जा रही हैं. मैं समझता हूँ आप लोगों ने जब से सिनेप्लेक्स आए हैं 90% ऑफ द ऑडियंस को वैसे ही कट ऑफ कर दिया है बिकॉज ऑफ द सिनेमा टिकट. 1000 रुपये, 600 रुपये, आप मुझे बताएं कितना पब्लिक अफोर्ड कर सकती है यहाँ पे. नंबर 1. इसमें सोल्यूशन भी हो सकता है. लेट्स सपोज आप फर्स्ट 2 वीक्स में आप महंगा टिकट रख लें, क्योंकि 90% पब्लिक इतना महंगा टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती. लाइक मी, हम लोग नेट पे फिल्म में देखते हैं, लिख देते हैं वॉचिंग सो एंड सो फिल्म ऑन न्यूप्लेक्स. कौन देखता है वहाँ पे जाके कि न्यूप्लेक्स में बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ. आई थिंक आप लोग टिकट सस्ता करेंगे तो आपके रेवेन्यूज भी जनरेट होंगे ऑटोमेटिक. आपको कोई ये कार्नेटो कराची से लाहौर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट डू यू से अबाउट नदीम साहब? टिकट सस्ते करें. आप सस्ते टिकट मांग रहे हैं. कैपरी भी चल रहा है, निशाद भी चल रहा था, उनके टिकट सस्ते थे, तो वहाँ दुनिया क्यों नहीं जा रही? नहीं, आप एक टारगेट ना करें ना, किसी एक का नाम मत लें. देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अभी भी कैपरी चल रहा है, कैपरी स्टिल ऑन. मैं एट्रियम चला रहा हूँ, एट्रियम में उसका टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया एट्रियम पहुँची. आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि हर चीज़ की फैसिलिटी की भी एक कॉस्ट है. यहाँ पे हमारे सामने मोर फिल्म सेकंड डे आप लोगों ने हटा दी कि वो बिजनेस जनरेट नहीं कर रही. वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है. कौन सी फिल्म? मोर मूवी 0 to 1. ये मेरे सामने की बात है. मैं हम लोग उसमें गए हैं, देखे हमने. आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ मोर. इन्हें पानी पिलाएं प्लीज. इन्हें पानी पिलाएं. मैं प्रोड्यूसर हूँ भाई मोर का. आई एम मैंने जामी के साथ मिलके बनाई है मोर. देखिए, मोर वॉज अ वेरी सीरियस फिल्म. जब आप कमर्शियल सिनेमा के अंदर आते हैं तो यू हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ. मेरे अपने सिनेमा हैं, मैं उनके अंदर मोर को सारे शो नहीं लगा सका. सिनेमा इज ड्रिवन बाय यू. सिनेमा इज नॉट ड्रिवन बाय मी. सिनेमा इज नॉट ड्रिवन बाय दीज फिल्म मेकर्स. हम आपको चीज़ें ला के दे रहे हैं, वो आप डिसाइड करते हैं.
कि कौन सी बहुत अच्छी है और कौन सी नहीं है, किसकी पॉपुलर डिमांड है, किसकी नहीं है। और सिनेमा में सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि इसकी कोई रेटिंग इधर उधर कोई कंट्रोल नहीं करता। ये 100% कंट्रोल पब्लिक से। पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी। नहीं करेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, ना सिनेमा वाला कुछ कर सकेगा, ना फिल्म मेकर कुछ कर सकेगा। और ये सिर्फ आपके यहाँ फिनोमेना नहीं है, ये दुनिया भर में है फिनोमेना। आप ऑस्कर की 5 फिल्में उठा लें जो नॉमिनेट होती हैं और उनका बिजनेस देख लें कि वो बिजनेस क्या करती हैं कमर्शियली। वो कुछ नहीं बिजनेस करती हैं, लेकिन फिल्में बहुत खूबसूरत होती हैं। सो उसको देखने वाला और उसको समझने वाला एक बिल्कुल डिफरेंट है। आपका क्या ख्याल है, ये जो जुरासिक वर्ल्ड और ये जो फिल्में जो इतनी बड़ी बन रही हैं, तो ये क्या बहुत ज़बरदस्त फिल्में हैं, बट पॉपुलर डिमांड तो है ना इनकी। वो दुनिया में $2-2 बिलियन का बिजनेस कर रही हैं, तो दुनिया बनाएगी वो, क्योंकि वो कमर्शियल वेंचर है। बट उसके साथ साथ बर्डमैन भी बन रही है, जिसको ऑस्कर जो है वो कमाल कहता है कि ये मूवी कमाल की है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क बताऊं आज। हमारा जो पुराना सिनेमा, क्योंकि मैं पुराना सिनेमा भी चला चुका हूं और मैं नया सिनेमा भी चला रहा हूं। फ़र्क ये है कि पुराने सिनेमा में हमारे पास एक ही ऑडियंस थी, जिसके लिए एक क्लीशेड फार्मूला था और उसी हिसाब से हम फिल्म बनाते थे। ये जो नया सिनेमा बना है, जिसको आप कह रहे हैं कि महंगा बहुत है, वो महंगा ज़रूर है, लेकिन उसमें एक बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑडियंस आ रही है, जो आज मोर को भी सपोर्ट कर रही है, मंटो को भी कर रही है, और जवानी फिर नहीं आनी को भी कर रही है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। वरना आज से 10 साल पहले मोर तो जिंदगी में हम सोच भी नहीं सकते थे कि मोर जैसी फिल्म भी बनेगी, या मंटो जैसी फिल्म जो है वो सिनेमा में भी लग सकती है। पाकिस्तान में 20 साल मैं सोचा करता था कि हम कोई एनिमेटेड फिल्म लेके आएंगे, या आनी चाहिए, सारी दुनिया में चलती हैं, पाकिस्तान में नहीं आती। आज एनिमेटेड फिल्में $4-4 लाख का बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो कर 4 सिनेमा में रही हैं, लेकिन कर रही हैं। इसका मतलब उसकी ऑडियंस तो है ना। और सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म आपकी अपनी पाकिस्तानी फिल्म है, जो इंडिया में आज तक एनिमेटेड नहीं चली, पाकिस्तानी में पहली फिल्म चल गई और उसने $6 लाख का बिजनेस कर लिया है इधर। ये तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। जहाँ तक बात रह गई आपकी प्राइसेस की, ये प्राइसेस खुद ब खुद सेटल होंगी जब सिनेमा बनेंगे। सिनेमा जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको सारे ड्रामे भी मिलेंगे कि जी दिन में कम हो गई प्राइस, रात में ज़्यादा हो गई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले वीक में ज़्यादा कर लो, फिर बाद में कम कर लो। लेकिन जिन जगहों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ प्राइस ज़्यादा रहेगी। अगर सारी दुनिया मिल के एक ही जगह चले जा रही है, तो वो उसको कैश करेगा। आज PIA बंद हो गया, शाहीन और एयर ब्लू ने 4 गुना प्राइस कर दी। आप शोर मचाते रहे, बट वो तो जाहिर सी बात है उसको कैश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। वही शाहीन और एयर ब्लू जो है वो 5-5, 6-6 हज़ार में भी आपको टिकट देते हैं जब उनकी डिमांड नहीं होती। जी, आई कैन सी। नदीम भाई नदीम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया। जी जी, नदीम, मैं गुल जाफरी बोल रही हूँ। नदीम, आपसे इसी उस छोटे से कमेंट से वाला सवाल शुरू करूंगी। छोटे छोटे से सवाल। गलत हो गया कमेंट मेरा? नहीं, गलत नहीं हुआ। आपने कहा 10 मोर डाइवर्सिफाइड वो है, लेकिन व्हेन आई ग्रू अप, अरमान में भी और नायला में भी और साइका में भी डाइवर्सिफाइड आवाम जा रही थी, हाईएस्ट तबके से लेके। अब आप चली गई 60s में। मैं यही तो मेरा सवाल वही है ना, तो आई एम रिवाइजिंग है कि क्या फॉर्मूला फिल्म्स ऑफ 50s to 70s का कोई रूम रिवाइव, व्हेन आई से रिवाइवल ऑफ लॉलीवुड, आई मीन दैट गोल्डन, टू मी it's kind of golden, maybe not to compared to the movies across the border. I thought they were, some of them were, Maula Jat including, कि 2 बीघा ज़मीन including, and Arman and all of that including. उसका रिवाइवल का फॉर्मूला है, विलन है, कॉमेडी है, 10 गाने हैं और पियानो पे वो है। उस टाइप की फिल्म थोड़ी वहाँ चल रही है, वो हमारे यहाँ डेड हो गई थी।
रीमा, साइमा, रेशमा और नूर और इनका जो दौर था वो आप सही कह रहे हैं, वो सिर्फ फ्रंट बेंचर्स का रह गया था, उसमें हम सब ने जाना छोड़ दिया और हमारे बच्चों ने फिर पाकिस्तानी पिक्चर्स नहीं देखी। तो उसका, और दूसरे आप जो कह रही थी शहनाज के जवाब पे आपने किसी ने जवाब दिया कि इफ़ स्क्रीन्स बढ़ेंगी डू वी हैव मटीरियल। माई क्वेश्चन टू द फिल्म आई एम इमोशनली अटैच्ड टू लम्हा इज़ दैट इट डिड नॉट हैव enough screens for them to run and they were not showing profits. They were Zinda Bhag and Lamha were released at the same time, but there were not many screens. There were lined up. तो क्या screens आने से बहुत लोगों ने नहीं देखी? मैंने जिंदा भाग नहीं देखी, थोड़े दिन चल के उतर गई। क्या screens पे repeats का कोई वो है concept? Will anyone answer that? Repeats नहीं आती हैं क्या? फिल्म दोबारा नहीं आएगी? देखिए, कब देखूंगी मैं? पहले मैं आपका जवाब दे दूं जो आपने पुरानी बात, And can we keep the questions a little brief now because we are running out of time. पहले मैं आपका जवाब दे दूं जो पुरानी बात की। जब आपने पुरानी बात की उस वक्त और कोई सिनेमा का मीडियम नहीं था। सिनेमा वाज द ओनली मीडियम एट दैट टाइम, सो एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी हैड टू गो टू द सिनेमा। टुडे दैट इज नॉट द सिनेरियो। टुडे यू हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड मीडियम्स। आपके पास सिनेमा है, सिनेमा के बाद VCR DVD है, DVD के बाद पे टीवी है, उसके बाद फ्री टीवी है। सो देर आर मैनी फॉर्म्स। वही सिनेमा, वही फिल्म आप बहुत सारे फॉर्म्स में देख सकते हैं। दैट इज वाई द ऑडियंसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव बिकम वेरी स्मॉल फॉर सिनेमा। सिनेमा हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, अब आ जाइए, आपका जो दूसरा सवाल है कि वो फिल्में दोबारा क्या बनेंगी? क्यों नहीं बनेंगी? वो बिल्कुल बनेंगी जब वो डाइवर्सिफाइड। वो कह रही कि पुरानी फिल्में लगाने का रिपीट उसका नहीं, रिपीट नहीं है। मैं आपको फिर वही बता दूं, रिपीट DVD। वरना पुराने जमाने में मैंने वेरी ईगल्स डेयर 3 बार चलाई है, हम चलाए। मैं आपको पाकिस्तानी और इंग्लिश की बात नहीं है, देखिए, या फिल्म की बात कर लीजिए या पाकिस्तानी और इंग्लिश की बात कर लीजिए। मैं फिर वही आपको कहूंगा कि ये एग्जिबिटर पे नहीं है, ये किसी एग्जिबिटर पे नहीं है अनलेस आप उसको सपोर्ट करें। हमने 8-8 महीने फिल्म चलाई है, पाकिस्तानी 8-8 महीने चली है, कोई इंडियन फिल्म नहीं चली। आप सपोर्ट कर रहे थे, हम चला रहे थे। चलिए, I think we have one lady standing here for a while now. जी। My name is Sadia Mahmood, University of Karachi. Two things that I want to say. Number one, absence of literature in television happened. वो तो हमने देख लिया, और हमारे ड्रामे का जो हशर हो रहा है वो हम सब we are going through it. अब वही चीज़ सिनेमा में मुझे होती भी नज़र आ रही है एज एन ऑडियंस एंड एज अ सोशल साइंटिस्ट, एक। और दूसरा जो ख़ास तौर पे द टू लेडीज़, द एक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द एक्टिंग कम्युनिटी हियर टुडे, objectification of women in the films was huge in the olden Pakistani cinema. Now I see the same thing happening again. For example, Bin Roy. आपका क्वेश्चन क्या है? जी, absolute objectification. So kindly comment on the fact that how as female actors, as part of film industry, would you want to counter that and make sure that that doesn't happen here? Thank you. Thank you. Ji, Nimra, would you like to take that? I think yes, it's true. I would agree that our stories on television have also suffered. ये बात इसी स्टेज पर मेरे ख्याल में पिछले साल बुशरा अंसारी से भी पूछी गई थी कि ये हमारी कहानियों को क्या हो गया है, हम हर वक्त रोते क्यों रहते हैं. And yes, objectification, it's such a universal thing that happens in cinema, on television. But the only thing that as a performer, I can take that responsibility to not succumb to that myself. And I can hope that there are more filmmakers out there, and more women filmmakers and producers and distributors, and more power goes to them, and hopefully that'll change things.
Okay, last two questions. This lady, yes. I had a quick comment on his pricing, and then especially in North America, they have discounts, student discounts, and Tuesdays that they have half or matinee shows which are cheaper. So maybe we can have a similar Yes, model that's here. what he said, that as we would grow. give people who can afford to go on a full price ticket to get that. My question is, film festivals world over play a very important role for films, especially young directors and producers, a platform to showcase their movies and then perhaps get distribution to actually have a theater release. So I just wanted to know, like, what kind of thing or such festival. I know there was Kara Film Festival, which has not been going on. So what kind of platforms do young or people with less money or less connections have to make films and be able for them to reach out to the right audience? Yes, Hashim. Okay, thank you. So first of all, I would like to comment on the pricing. नदीम भाई ने भी बताया था. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके उस पर कि मैंने खुद सिनेमा एक साइट एरिया में सिनेमा को रिफर्बिश किया 50 रुपये टिकट पे, 50 रुपये टिकट पे, और 3 हफ्ते के बाद द ओनर केम टू मी दैट आई डोंट वांट टू रन इट एनी मोर, इट्स नॉट वर्किंग. एट द सेम टाइम इसी कराची शहर में मेरे पास सिनेमा है जिसका 1200 रुपये टिकट है और वो सोल्ड आउट जाता है. सो आई थिंक दैट गोज विद नदीम भाई's पॉइंट. Somehow deep inside we are not only coming to cinema for our intellectual satiation, but we are also going to cinema as an evening out, and for evening out we are ready and willing to be able to pay that kind of money. लेकिन having said that, सारे exhibitors, नदीम भाई शामिल, मैं भी, हम 12 शहरों में, सारे छोटे शहरों में जो पुराने सिनेमास थे उनको रिफर्बिश करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द प्राइसिंग डाउन, कि अभी जो 500 रुपये का टिकट है उसको 200 पे ले आएँ. जिस तरह यहाँ पे अभी फेडरल बी एरिया में मेरा जो सिनेमा है वो 300 रुपये तक का टिकट करता है. नाउ इट्स गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट क्वेश्चन. आई मूव फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वी हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम दैट ऑफर्स 20% डिस्काउंट. वी हैव स्टूडेंट pricing which is 10% discount. We have matinee shows which is around 50% discount. We have buy one get one free promotions, all sorts of things. So yes, we are doing all of that and the pricing is coming down. Now coming back to the film festival question, just last year Pakistan saw at least 4 film festivals. मैंने Cinepex में children film festival करवाए हैं, children film festival. बच्चों, स्कूलों के बच्चे कराची में आए हैं. There were 7,000 school kids. 7,000 school kids only in Karachi attended only children film festival. Similarly in Lahore, एक और film festival हुआ था Karawood Film Festival के नाम का. It was not, I would say, it was not a perfect film festival, but at least a step in that direction. We are again trying to refresh a few, just like you mentioned Kara Film Festival, उसको भी हम refresh करने की कोशिश कर रहे हैं. But I think this is a good point. We'll keep working in that direction. Okay, I'm sorry. I know I can see there are still lots of hands up and people still want to ask questions, but I've been told there's another session right after this one, and it's already 4 o'clock. I thank you all very, very much for being here, and Thank you, Ji. I hope Thank you you very enjoyed the much. session. Thank you.